A very good afternoon, dear students. So previously we have started the concept of what sparse matrix. So what exactly sparse matrix is, what exactly the dense array is that sparse array and dense array, we have seen the difference of these two. Okay, the sparse array is what? The data in which many elements have value as a zero. What about dense array? There is a most of the elements have non-zero values. Okay, this is the difference between dense and sparse that we have here. Now what exactly sparse matrix is? Sparse matrix is most of the elements are zero. Okay, so what is the use of it? Okay, so we'll have to think on this matrix. We have here this example, that is the matrix is what, how size, how much size of that matrix, that is 6 into 9, means total 54 values we are going to store into that matrix. Just concentrate, you can easily understand that non-zero elements are very few elements are non-zero and all other zero elements. Okay, but we are concentrating on only the non-zero element here. Okay, so it's totally a wastage of memory. Okay, so that's why for avoiding this problem, the problem actually what is that the matrix is having only 14 non-zero integer values. Okay, and the actual value, total value is 54 into 2 bytes, means total 10 bytes we are storing into that matrix, but we are concentrating on only 14 values. That is, we required only 28 bytes. Instead of 108 bytes, we have to focus on 28 bytes. This is more feasible to clear the concept of this matrix. Okay, that's why it's actually the vestige of memory. Fine. So that's why we have to convert that matrix into the sparse matrix. We are representing in different way. That is very important point. That is a triple. We can say that this is the value I, j, and value means the row value, column, and particular value we are going to store into that triple. Means we are using only the three columns here. Okay. So what kind of three column that we have to clear here? Fine. So we'll concentrate on this example. So according to this matrix, we can say that how many total number of rows, how we are representing this sparse matrix in another way, that is, first one is what, number in matrix. This matrix only total number of columns are 3. The first one is what, number of rows we are going to store into that matrix. मतलब ये जो matrix है उसमें से कितने total number of rows है वो हम लोगों ने store किया. Second value will be what? Second value will be number of columns. Just concentrate, 9 value will be number of columns, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are the number of columns. And the next value, that is 10. 10 represents, that is number of non-zero elements. Okay, so we are not concentrating on whole sparse matrix here. We are concentrating on only these three values, that is number of rows, number of columns, and number of non-zero value. Okay, so actually this is what representation of sparse matrix is. Okay, so this is actually what, just concentrate on these two differences. We are using this alternative method for representation of sparse matrix here. The previously, when we are talking about with zero element, it requires 108 bytes, but when we are converting, we are using this alternative method, the size of sparse matrix is only 66 bytes. So it's no more, its execution should be the faster as compared to the previous sparse matrix. Okay, and always remember that there is a first row. Okay, this is a sparse matrix representation. The first concept is very, very important. That is, here I'm representing that. What is the important part here? That is the first row. Always remember that in sparse matrix, actually total number of non-zero elements कितने हैं? 10. Okay, तो कितने total number of rows होने चाहिए थे यहाँ पे? 10. Okay, but मतलब क्या, we are concentrating only the non-zero values. जो मैट्रिक्स के अंदर जिस लोकेशन पे, जो कौन से रो पे, कौन से कॉलम के पोजीशन पे नॉन जीरो वैल्यूज है, उसको हम स्टोर कर रहे हैं. ओके, और हमेशा याद रखो, फर्स्ट जीरो लोकेशन में always we are storing, always we are storing total number of, this 6 represent total number of rows in given matrix, sparse matrix. This second 9 value will be the total number of column, and the next value is total number of non-zero value. मतलब नॉन जीरो छोड़ के जितने भी जीरो वैल्यू छोड़ के जितने भी नॉन जीरो वैल्यूज है, उसका काउंट ये स्पार्स मैट्रिक्स में स्टोर हो जाता है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट, एंड इट हैज ऑलवेज रिमेंबर दैट, that is how many total number of columns are there. Always remember that in sparse matrix
total 3 columns only, not more than that column. Matlab first column, then second column, and then last one is third column. So total how many columns we are going to store into the sparse matrix? Only 3 columns. So what is the representation of three column is that we need to focus on. Okay, so this is very important part that I need to quote again for performing the practical point of view. Okay, so one important thing here, so everyone can clear that. So there is total number of नॉन जीरो एलिमेंट 10 है. इसका मतलब है नीचे के नेक्स्ट रो में जो जहां जहां पे नॉन जीरो वैल्यू प्रेजेंट है उस लोकेशन को सिर्फ क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है. कौन से रो पे? जीरोथ रो पे. कौन सा कॉलम? जीरोथ कॉलम. एंड वैल्यू क्या है? 1. ओके, 10. ओके, लाइकवाइज अगेन जीरोथ रो पे 7th नंबर के कॉलम पे कौन सी वैल्यू है? 20. लाइकवाइज हमें कितनी वैल्यू स्टोर करनी? यहाँ पे टोटल 10. यहाँ से काउंट करेंगे टोटल तो कितने वैल्यूज मिलेंगे हमें? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 10. बट हियर ऑलवेज रिमेंबर दैट वन रो इज एडेड. वन एडिशनल रो क्यों है? क्योंकि फर्स्ट रो में हम लोग स्टोर कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ कॉलम एंड टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो वैल्यूज. ओके, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स. Okay, so this is very important part that I need to show. So one important part here, that is here. Fine. So how it will work? Fine. So just concentrate on this example, that is one important part here. Yes, I need to show. That we need to concentrate now. Just concentrate. This is a previous example. That is, we have seen this is a representation of sparse matrix, right? So how the sparse matrix is represented? We know that this is total number of rows, column, and non-zero values. All non-zero values are storing into the particular location like this. Okay, this is our original sparse matrix. We have to do the transpose here. Transpose means there is just this is number of first column represents the row value. This is what? This first column, and this is second column. Okay, so always remember that here is the first row represent here the row, and second column represent the column value. Okay, so this we are just exchanging. Transpose means we are exchanging rows into column, column into rows, vice versa. Okay, so likewise here जो second column है यहाँ पे transpose में क्या किया? Second column will be the first column, and जो first column था वो क्या बन गया? Second column बन गया. Just concentrate here. Nothing change in that, because in transpose means we are converting rows into column, column into rows. Okay, so here just we are switching first row, first column into the second column. Fine. This is the transpose of that matrix, and the important point is that value is as it is. Value वहाँ पे स्टोर रहेगी. सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं? कॉलम और रो, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम बना रहे हो, सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम. ओके, सो विल more focus on that, how the fast transpose will do. We'll focus on that. Before that, we have to clear the coding part first. Okay, how to make the code of it, that we have to focus on. Fine, everyone. So Yes, fine. Okay, fine. So what operations we have to do? We have to accept the matrix. We have to display it. Then create a sparse. We are scanning first normal matrix. Then we have to create into the sparse matrix. Sparse means we have to convert it into only the 3 columns. That is number of rows, number of columns, and non-zero values. Okay. After that, we have to convert it into the simple transpose, then fast transpose. After that, we have to do the addition of the two sparse matrices. Okay, so first of all, we are scanning the matrix. So I'm just showing the output what we expect here. That is, enter the number of rows you want to insert. I'm inserting the 3 number of rows. Number of columns will be 3. Okay, we are entering the matrix here. The first row will be 1 0 0.
second 2 0 0, last one is all values are 0. Then we are entering the second matrix, again same 3 by 3 matrix I am scanning. Okay, so when we display it, after the displaying it will show like this. Okay, so this is our sparse matrix, that is non-zero values is lesser than 0 value. Okay, this is first sparse matrix, this is second sparse matrix. Okay, so now we're displaying the value here. Okay, so first we for create the sparse, for creating the sparse what it expects, क्या एक्सपेक्ट करोगे आप लोग, स्पार्स में उसको कन्वर्ट करना है, ये हमारा जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द स्पार्स. देन व्हाट इज द फर्स्ट टर्म इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग द स्पार्स मैट्रिक्स? Yes, Number of rows. yes, exactly. So for first converted matrix, their three value will be what? Number of rows. Second, three value for number of columns, and this is what? Non-zero values. Okay, means from first matrix we can easily understand that number of rows कितने हैं? 3 है. Non-zero values कितने हैं? 2 है. And number of columns कितने हैं? 3. Got it? So 3, 3, 2. These values expected after creating the first sparse matrix. Okay, this is the value is 3, 3 and 2. Okay, and what about next row is, next row will be where actually the non-zero value is stored in a given sparse matrix. So here one value is present, it is a non-zero value in 0th column and 0th row. That's why we have displayed here 0th column, 0th row, 0th column, the first non-zero value is present. Similarly, we focused on the second value, that is 2. 2 is present on second row and first column. Again here the 2 is present on what? A row is first and column again 0, the value is presented as a 2. Okay, so likewise we have represented our normal matrix into the sparse matrix. Okay, after that we have to display the we have to perform the simple transpose here. Okay, so how the simple transpose will be? Okay, so simple transpose will be just सिंपल ट्रांसपोज में क्या होगा, जो फर्स्ट कॉलम है वो सेकंड बन जाएगा. दिस इज आवर फर्स्ट कॉलम, दिस इज आवर सेकंड कॉलम. फर्स्ट कॉलम will be on second column will be on first column. Okay, so likewise we are just doing the transpose here. Value as it is, we just exchanging these two columns. Okay, this is actually a simple transposes. Okay, now we'll focus on what the past transpose. We are not concentrating on past transpose now. So next we'll concentrate on addition part. So what happens in addition part? Addition means where actually our if we are accessing these two matrices, that is first matrix, first pass and second pass, and in which we have just adding, which value we are going to adding here. The first row is not useful because it store the number of rows, number of columns and number of non-zero values. So we'll focus on second row and the value will be second row का जो last वाली value है, the last third column represent the non-zero value. This one adding with this one, second the matrix, this 2 is adding with this 2. Okay, so likewise we have done only the addition of the non-zero values only. I hope everyone clear this. So according to that we have done the addition of non-zero values only. Okay, so this program we have to implement, then we'll have to concentrate on all the parts how it will implement. Okay, so now we focus the one by one. So again, one important part I need to quote here, that is implementation. Okay, so no doubt I'm implementing program in C. That's why the syntax is C language, that is stdio.h, and the conio.h I'm using for console purpose. Okay, now so we have to perform these operations, these functions. We have to accept the matrix. We have to display that matrices. One function is given. So I'm using, this is what I'm using the function in program, that is I'm passing the parameters into that function. Okay, so I'm using, first of all we have to create the matrix into the sparse, that's why I'm using this function. Then simple transpose we have to do, fast transpose we have to do, and sparse addition we have to do. So these are the functions we'll take. Okay, we have to take here. Then after that we are in main we have declared the variable, that is array 1 is first array matrix, array 2 is second matrix, C1, C2 for converting into the sparse. That's why it is used.
then this is a simple transpose, fast transpose, and addition of two matrices. Okay, so first that we have used the switch case here. For switch case we have to start the do में हमें क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो हम लोगों को सी आउट करना पड़ता है, प्रिंट करना पड़ता है. The first case will be the accept, second case display, then we have to display that matrix, then convert into the sparse. That's why third case is create sparse, simple transpose, fast transpose, then we have to do the addition. This kind of program we have to do. Okay, so case one will be what? In switch, function is used, then enter your choice is very very important. Then उसको स्कैन करना है, सीन करना है. स्विच फंक्शन में हम लोग उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं. देन सी एच, स्विच सी एच में क्या आएगा इन केस वन. ओके, केस वन what we are going to do here. ओके, सॉरी, तो केस वन क्या है, एक्सेप्ट. तो पहले हमने क्या किया, एंटर द नंबर ऑफ रो यू वांट टू इंसर्ट, उसको स्कैन किया. एंटर द नंबर ऑफ कॉलम यू वांट टू इंसर्ट, उसको स्कैन किया. एक्सेप्ट फंक्शन, एक्सेप्ट मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअल मैट्रिक्स को स्कैन कर रहे हैं. ओके, सो हम ये जो कंपाइलर है एग्जीक्यूशन करते हुए कहा जाएगा एक्सेप्ट फंक्शन, जो कि हम लोगों ने नीचे लिखा है. ओके, दिस इज अवर एक्सेप्ट फंक्शन. अभी हम लोग फंक्शन के थ्रू कोडिंग कर रहे हैं. तो एक्सेप्ट फंक्शन हमने लिखा है, फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास किया है जो एरे, क्योंकि मुझे क्या करना है, एरे को मैट्रिक्स को क्रिएट करना है. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हियर टू डायमेंशनल एरे. आई एम डिक्लेयरिंग ARR द वर्ड फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स, m for number of rows and n for number of columns. Okay, so this logic is simply we are scanning the two-dimensional matrix here. Nothing change in that. The first m, we know that the first for loop for I equal to 0, I is less than m, I plus plus for m for number of rows. Okay, कितने number of rows के लिए हमारा m work करेगा. And the next one j for what, n for number of columns. Okay, number of columns you can see here. Okay, so m for number of rows, n for number of columns. Likewise, we just scanning using accept function, we have just scanned these first matrix. Okay, similarly we have to scan second, then we can scan the second matrix also. Okay, so here just we are scanning the normal matrix, जो कि हम लोगों ने नॉन जीरो विद जीरो वैल्यू हम लोग मैट्रिक्स स्कैन कर रहे हैं. दिस इज अवर स्पार्स मैट्रिक्स. तो सिंपल मैट्रिक्स वी आर गोइंग टू स्कैन हियर. Okay, so simple function here, that is accept. Okay, so case one will be the accept. Same function we are calling again for first accept for matrix 1, second for matrix 2. Okay, you can develop this logic in another way, no problem. This is the one way we are representing. Okay, for displaying purpose what we'll do, case 2 में क्या है, हमें क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को डिस्प्ले करना है. तो डिस्प्ले फंक्शन में क्या आएगा, instead of scanf we have to write the print. Nothing change, just concentrate here. Instead all the statements are same. Again display function, we are passing the two-dimensional array for displaying, m for number of rows, n for number of columns. Then we are displaying here. डिस्प्ले के लिए सिर्फ क्या scanf की जगह पे printf आएगा, scene की जगह पे cout आएगा. We are just printing that matrix. Okay, the both the matrix we have displayed here. So it's very simple logic. Okay, now case 3. Case 3 means we have to create the sparse matrix. It's perform very major role in our code. Okay, so create function, we focus on the create code here. Just concentrate here. Okay, so concentrate. It's not a return type any. The void is a return type of create function. फंक्शन के अंदर हमने पैरामीटर पास किए है. फर्स्ट फॉर integer array 1 for first matrix, second dimensional array for second matrix. Then we are converting that matrix into the sparse, so that we are using another two variable, that is C1 for first sparse matrix, C2 for second sparse matrix, and I am passing the parameter here. Why we are going to pass the parameter? Because हम लोगों को क्या करना, हम लोगों ने वो फंक्शन में उसको रिप्रेजेंट किया है. जब हम लोग कोड को इंस्टेड ऑफ स्विच केस हम लोग फंक्शन में एग्जीक्यूट करते हैं, at that time we have to pass the parameter here. Okay, it's not necessary always we have to pass it, but I am doing the coding in different way. Okay, here just concentrate here, that is we are declaring the variable. Okay, just using one function, that is count non-zero. Okay, so what is the role of that count non-zero function? Okay, means we have to count in your matrix कि कितने total number of non-zero elements है जो कि हमें क्या करने हैं, स्कैन करने हैं. क्लियर हो गया सबको?
हमें क्या करना है, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस फंक्शन। काउंट नॉन जीरो फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर एरे में जो भी एरे 1 हो एरे 2 हो, उसमें उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन नॉन जीरो एलिमेंट्स हमें काउंट करना है। ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस फंक्शन। और जब मुझे वैल्यू काउंट करना है, मीन्स व्हाट, आई हैव टू गिव द फंक्शन एज अ रिटर्न टाइप। सो इंटी काउंट की वैल्यू मुझे इंटीजर चाहिए, क्योंकि कितने टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो वैल्यूज है वो मुझे स्पार्स मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करने हैं, इसीलिए ये सेपरेट फंक्शन यूज किया और उसका रिटर्न टाइप है इंटीजर। ओके, सो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, अब जब हम लोग रिटर्न टाइप देते हैं, इसका मतलब वी हैव टू स्टोर द वैल्यू समवेयर। फाइन, तो यहाँ पे जस्ट कॉन्सेंट्रेट करो। सो आई जे एंड काउंट वेरिएबल वी हैव डिक्लेयर्ड हियर, दैट इज उसके अंदर पूरे मैट्रिक्स के अंदर हम लोग चेक कर रहे हैं इफ, अगेन फ्रॉम नंबर ऑफ रोज से ही वो स्कैन होगा पूरा, and j for number of columns, that is total number of columns in store in n. So we have to check if a array of ij, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होगा तो उसको क्या करना है, काउंट करना है। मीन्स व्हाट, वी हैव टू टेक द नॉन जीरो वैल्यू हियर। ओके, सो नॉन जीरो वैल्यू ली हमने। ओके, सो काउंट वन में हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की नॉन जीरो वैल्यू स्टोर की। ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर स्टोरिंग हियर, जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर। Okay, so we are storing sparse matrix के, always remember that 0 0 sparse matrix के 0 लोकेशन में जो sparse matrix है वो किस में रिप्रेजेंट करे, C1। 0 means this 0 represent row, first row, and this 0 represent first column. Okay, sparse matrix के first row में first column में कौन सी वैल्यू होती है, that is number of, which value, that is number of rows. Okay, so if you are taking here, the value will be according to that we have to store the total number of rows कितने होने चाहिए। Let's say I am talking about the values 2, तो ये प्लस 1 करके कितनी वैल्यू हो जाएगी, 3। Okay, similarly in C1 we are storing C1 जीरोथ लोकेशन, मतलब फर्स्ट रो है और कॉलम 1 है, तो 1 कॉलम में हम लोग क्या स्टोर करते हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ column. yes columns we are going to store here. Okay, then next second location में हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं, this is number of rows. First one will be what, number of rows we are storing. ये कोड को बहुत अलग अलग वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड दिस इज व्हाट, नंबर ऑफ नॉन जीरो वैल्यू। ओके, तो ये हम लोगों को स्टोर करना है, दैट्स व्हाई वी आर क्रिएटिंग this function. Okay, so number of non-zero values we are going to store here. Okay, उसको स्टोर किया। स्टोर करने के बाद हमें क्या करना है, अभी अभी हमें पहला वाला रो तो हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ नॉन जीरो वैल्यूज हमने स्टोर किए हैं। इन नेक्स्ट फॉर लूप, जस्ट कॉन्सेंट्रेट, ऑलवेज रिमेंबर दैट इन स्पार्स मैट्रिक्स, either simple dense matrix, everywhere element is stored by रो वाइज ओनली। ओके, कॉलम वाइज हम लोग वैल्यू स्टोर नहीं करते हैं, रो को फिक्स करते हैं और रो में वैल्यू क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे फिर से जो आउटर लूप है, फॉर नंबर ऑफ रोज, मतलब ये किसके लिए चलेगा, आई फॉर रोज, मतलब पहले रो में हम लोगों ने वो वैल्यू स्टोर कर दी है, नंबर ऑफ रोज, कॉलम्स एंड नॉन जीरो वैल्यू। नाउ नेक्स्ट इसमें हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टोर द एक्चुअल वैल्यू। ओके, अभी हमें क्या स्टोर करना है, एक्चुअल वैल्यू स्टोर करना है। सो एक्चुअल वैल्यू मतलब क्या, कि हमारी कौन से रो में, जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर, इफ एरे ऑफ आई जे इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब हमें नॉन जीरो वैल्यू सिलेक्ट करनी, बिकॉज वी आर स्टोरिंग हियर, स्टोरिंग नॉन जीरो वैल्यू। ओके, यहाँ पे क्या स्टोर कर रहे हैं हम लोग, स्टोरिंग नॉन जीरो वैल्यू। ओके, जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर, हम नॉन जीरो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, इसका मतलब है इफ इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन तू क्या कर, फर्स्ट C1 ऑफ k क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोगों ने k को इनिशियलाइज किया k इक्वल्स टू 1, मतलब k कौन से लोकेशन से चलेगा, 1 लोकेशन में, क्योंकि जीरोथ लोकेशन में, जीरोथ लोकेशन का जो फर्स्ट रो है उसमें हमने नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ नॉन जीरो वैल्यू स्टोर की है। हमारी एक्चुअल वैल्यू फर्स्ट लोकेशन से चलने वाली है, दैट्स व्हाई वी आर स्टोरिंग हियर C1 ऑफ k ऑफ 0, उसमें जो रो की पोजीशन आएगी, जिस रो के पोजीशन में, जिस कॉलम की पोजीशन में हमारी नॉन जीरो वैल्यू है। ओके, सो आई होप एवरीवन क्लियर।